Hello everyone, I welcome you all to Launchpad Education Punjab. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ to the final revision for the Naib Tehsildar Exam. 20 days ਆਪਾਂ approximately 2000 MCQs ਜਿਹੜੇ ਉਹ solve ਕਰ ਲੈਣੇ related to various subjects. Today's class is particularly going to be on the topic of current affairs, जिन्ने भी important current affairs या current affairs ਨਾਲ related ਕੋਈ ਵੀ ऐसा static part ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ question ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ chances ਤੁਹਾਡੇ exam ਵਿੱਚ ਹੈ. We'll be discussing that. पहले ही दस दा क्वेश्चन का जो लेवल है दिस इज गोइंग टू बी मॉडरेट टू टफ बिकॉज आप ਹੁਣ फाइनली एग्जाम के वाल जा रहे हैं सो दिस इज द टाइम कि ਅਸੀਂ अपनी तैयारी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है फाइनल टच दी है राइट सो क्वेश्चन का लेवल इज गोइंग टू बी मॉडरेट टू टफ एंड इफ यू फाइंड दैट ईजी then that's very good and then one core batch for the Punjab exams has already been launched and the पहली class ਜਿਹੜੀ है that will be flashed on YouTube this Sunday 15th okay 15th ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਵੇਰੀਅਸ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣਗੇ ਸੇਮ ਟੀਚਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਔਨ YouTube ਠੀਕ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੋਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਕੁਆਂਟ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 2 3 एग्जाम ज़्यादा वैकेंसीज आनी है तुम सारी वैकेंसीज ऑलमोस्ट जो फिल करने वाले हो then this is the time that you start preparing then जी बैच की वैलिडिटी है that is going to be lifetime you can attend this classes of this batch recorded session भी तुहानू मिल जाएंगे live session अटेंड करोगे इस तो इलावा तुसी launchpadeducation.in ते जाके कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कोर्स कंटेंट किहड़े कोर्सेज अवेलेबल है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो लिंक दिता गया तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है कोई होर क्वेरी होए these are our numbers you can call all our numbers then what is the prices of these prices की है बैच दे ऑनलाइन 550 and ऑफलाइन बैचेस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ cost is 14000 then ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓਗੇ LP Nikita ਆਪਣਾ discount code and you will be getting a discount of 10% ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ऑनलाइन बैच becomes 4950 and offline batches 12600 right so online batches ਜਿਹੜੇ है live interaction है you can ask your doubts across Punjab ਤੁਸੀਂ किसी भी जगह तो online classes लगा सकते हो ठीक है we have a very good feedback for the online classes ठीक है then again demo classes attend कर सकते हो website ਤੇ visit कर सकते हो lecture ਦਾ ਜਿਹੜਾ PDF है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ telegram channel launchpad education punjab ਤੋਂ link ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ description ਵਿੱਚ telegram ਦਾ okay moving on to the first MCQ for the day answers देंगे quickly काफ़ी क्वेश्चंस आप कवर करने हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन अंजलि इंदू आकाश गुरमीत कमलप्रीत गगनदीप वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्वेश्चन डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया पब्लिश कौन करता है इट इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस देन इट इज़ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड देन वी हैव इज Ministry of Agriculture already told question the level is going to be a little bit moderate some of you may find it difficult लेकिन session ਨੂੰ end तक लगाना है so that you can add on to your information good morning Jyoti okay C B any more answers desertification and land degradation okay A may be ओके स्टेट वाइज कितना लैंड जिहड़ा है वो डिग्रेडेड है डिफरेंट स्टेट्स दा वो इस एटलस में पब्लिश किया जाएगा एंड इट विल बी पब्लिश्ड बाय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ओके मेरा तुहाडे तो एक क्वेश्चन है इंडिया जिहड़ा है उन्हें लैंड रीस्टोरेशन एंड लैंड न्यूट्रलिटी जिहड़ी है उन्हें अचीव करना है डिग्रेडेड लैंड दी बाय विच ईयर India wants to achieve land degradation neutrality and restore 26 million hectare of degraded land जो degrade हो चुका है by which year carbon neutrality का तो सारे नू पता होगा at least 6 months Jatindeep Singh we are covering 6 months 2030 correct yes Radhika Anjali it's not 2024 it is 2030 moving on to the next question G33 sometimes seen in the news is related to ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ G33 ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ
A group of developing countries advocating for nuclear disarmament at United Nations. B statement, group of developing countries fighting for trade related aspects of intellectual property rights. Waiver at WTO. C statement, group of developing countries ਜਿਹੜੇ negotiate कर रहे हैं agriculture ਤੇ लगन वाले trade and tariff exemption at World Trade Organization, यानी कि ਜਿਹੜਾ agriculture ਦੇ sector ਵਿੱਚ trading ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ tariff ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ reduce करना. C statement, group of developing countries ਜਿਹੜੇ कि major global economic issues ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ कर रहे हैं. Okay, G20 and G7 पता है. G33 a lot of you have heard first time. G33 ਨੂੰ lead ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ country ਹੈ that is India, right? So what are the G33 countries? ਇਹ ਉਹ countries ਨੇ developing countries ਨੇ group ਜਿਹੜੀ negotiate ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कि World Trade Organization ਜਿਹੜੀ ਹੈ ऐसे provisions बनाए whereby agriculture trade ਦੇ ਉੱਤੇ concessional amount ਤੇ ਜਿਹੜੀ trading है import export हो सके, it can be exempted. Okay, and याद रखियो it is not a group of developed countries, it is a group of developing countries and इन्हों lead कौन कर रहा है? India being a agriculture country is leading it. Okay, चलिए, yes, moving on to the next question. Pencil platform, important, it's seen in the news, is for the eradication of child labor, illiteracy, domestic violence, and then we have is poverty. Go on. Pencil platform. At times अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ बना हो तो पेंसिल प्लेटफॉर्म विच कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं. व्हाट डज C स्टैंड फॉर और E स्टैंड फॉर? इलिटरेसी, श्योर. A फुल फॉर्म दसा इलिटरेसी ते चाइल्ड लेबर च जेडे कंफ्यूज ने. प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर. Platform for effective enforcement of no child labor. Go on. Okay. आ गए सब दे आंसर्स ठीक. Okay. Child tracking system, complaint system etc. ਜਿਹੜਾ है इस pencil platform ਦੇ तहत introduce ਕੀਤਾ जाएगा. My question, इस platform ਨੂੰ promote ਕਰਨ ਵਾਲੀ, इस platform ਨੂੰ launch ਕਰਨ ਵਾਲੀ ministry ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Of course, आप सेकेंड अटैम्प्ट दे देने तो इतने एग्जाम च नहीं मिलेगा. इस प्लेटफॉर्म ਨੂੰ पेंसिल प्लेटफॉर्म ਜਿਹੜਾ है किस मिनिस्ट्री ਦੇ अंडर कवर होएगा? Any answers? मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्रीज ਦੇ प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है. इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, केड़ी मिनिस्ट्री है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली पब्लिश्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स एंड करंट सिचुएशन इंडेक्स. ये रिपोर्ट्स जड़ियां है किदे नाल रिलेटेड है? ऑप्शंस, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, एनपीएज एंड देन कंज्यूमर सेंटिमेंट्स. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स जड़ा है ये लोगों के सेंटिमेंट्स विद रिगार्ड टू प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो की है, कंट्री विच प्रेजेंट इन्फ्लेशन की है एटसैक्ट्रा दी रिकॉर्डिंग जड़ी है उन्होंने रिकॉर्ड करता है इस इंडेक्स दे विच. ठीक है, सो व्हाट इज द आंसर? गुड मॉर्निंग अमनदीप. वी हैव डन द इजी क्वेश्चंस. आई ऑलरेडी टोल्ड कि आप फाइनल रिवीजन वाल जा रहे हैं. दिस इज एड ऑन टू योर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन. बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. पेंसिल प्लेटफॉर्म पर पहले भी किया है कवर. यस, दोज हु नो द रेलिवेंस उन्होंने इन्फॉर्मेशन विच एड ऑन हो रहे हैं. दे आर फीलिंग के क्वेश्चंस गुड लेवल के क्वेश्चंस है. ओके, आंसर इज डी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स. ठीक है, हिंट तो पहले ही मिल गया सी. कंज्यूमर दे सेंटिमेंट्स विद रिगार्ड टू कंज्यूमर्स किवें फील करते हैं राइट नाउ करंट बिजनेस सिनेरियोज दा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस दा. ओके, चलिए moving on to the next question. Good morning Himanshu. Next, consider the following statement with reference to Envision mission. Envision mission is NASA led mission to Venus to study the atmosphere of the planet. Second, this is the first ever mission to study the planet Venus. I think a question ਆਪਾਂ Sunday marathon somewhere कीता है. Statement based question आ गया है.
एनविजन मिशन. डिड वी डू इट इन संडे मैराथन जो रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं? बोथ द स्टेटमेंट्स श्योर. ਇਹ फर्स्ट कंट्री होगी इस तो पहला वीनस ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ नहीं है. only 2. are you sure? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Russia did this mission. Russia launched this mission. Even Japan launched this mission. Right? First statement, this is by European Space Agency. Answer is D. कोई भी correct नहीं है. इस तो पहला 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ the mission was launched by it was launched by Japan and Russia, and this mission is with the help of European Space Agency. the mission है and NASA भी of course involved है, लेकिन mission initially European Space Agency ਦਾ है. Okay, चलिए moving on to the next question. India launched industrial deep decarbonization initiative to promote industrial energy efficiency in partnership with which countries? Option UAE, UK, United States of America, and then we have is France. Go on. Carbon industrial material ਨੂੰ reduce ਕਰਨ ਲਈ this initiative has been launched, popularly known as industrial deep decarbonization mission. किस कंट्री ਦੇ ਨਾਲ? We have already done this. Those who know the answer ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ answers. So 15 students who are watching, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ competition ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. It is UK. Correct. Answer is B, UK. Next question. Consider the following statement with reference to India Cycles for Change challenge. थोड़ा जिहा पीछे जा रहा है. First statement, Ministry of Environment, Forest and Climate Change curated this challenge under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. The challenge envisaged cycling as an important mode of safe and healthy personal transport medium, जेड़ा social distancing ਨੂੰ promote करेगा while being environmentally sustainable. Go on. Trend चलिया सी cycles बहुत ज़्यादा चलान दा. Right? So go on. Both the statements, Ministry of Environment, Forest and Climate Change की करेगी. Second statement तो correct है. Second statement is correct. Environment, Forest and Climate Change, Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Cycling ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ role play करेगा? Any answers? It was under Ministry of Housing and Urban Affairs. Not under Atmanirbhar Abhiyan. किस initiative दे अंदर? Smart Citizens Mission. Yes, Nitish has given us the answer. Housing and Urban Affairs. ठीक है जी? It is not Ministry of Forest and Climate Change. चलिए अगले question पे. चलो. Let us move on to the next question. Answer to this question is B. Only B statement is correct. Next. Which of the following statement is incorrect with reference to Sustainable Development Goal India Index? The third edition of SDG India Index and Dashboard 2022-21 जड़ा है release करने वाली agency, that is Niti Aayog. SDG Index 2021-22 is developed in collaboration with World Bank. Third statement, index जड़ा है जिन्नी भी states and UTs है ਉਹਨਾਂ ਦੀ progress ਨੂੰ track ਕਰਦਾ ਹੈ in 115 indicators that are aligned with the National Indicator Framework, and there are no states in the achiever category in the index released. Go on. B statement is incorrect, then D statement is incorrect. Any more answers? कौन release करता है इस index ਨੂੰ? नीति आयोग plus World Bank. Go on. Any answers? Are you sure? Second category ਦੇ ਵਿੱਚ top ਕਰਨ वाली states ਦੇ नाम है. Achiever category which there is no name. It is in collaboration with UNDP. Correct.
आंसर इज बी स्टेटमेंट गलत है, वर्ल्ड बैंक दे नाल रिलीज नहीं हुंदा, दिस इज विद यूएनडीपी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल इंडेक्स इंडिया का जिहड़ा है उन्होंने रिलीज करने वाली एजेंसी कौन है? ठीक है, वन लाइनर्स विच आंदा था, फटाफट क्विक आंसर्स मार्क करने सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज क्लाइमेट चेंज ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, यूएनईपी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड देन वी हैव इज नीति आयोग in association with global environment facility. Go on. B, UNEP. Sure. How many of you are guessing? Guess करने वाले कितने हैं? Any answers? Okay. D भी आया आंसर। ओके, ये कवर करता है हिमालयाज, काराकोरम एंड हिंदू कुश एरियाज नो। उथों दे हिमालयाज दे क्लाइमेट चेंज, कार्बन, रीजनल रेजिलियंस जिहड़ा है उन्होंने ट्रैक करता है एंड इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ओनली वन आंसर करेक्ट गिवन बाय नितिश, इट इज वर्ल्ड बैंक। हुण तुसीं इन्वायरमेंट पढ़ लिया तो इन्वायरमेंट वाली या तो आ सीगी तो आप बी ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ। इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। कुछ ऐसी एक्सैप्शन रिपोर्ट्स है जिन्होंने तुसीं देख के नहीं दस सकते कि इन्होंने रिलीज करने वाली एजेंसी कौन है, तो दिमाग विच रखियो, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, insecog sometime seen in news, it is a new type of warship inducted by Indian Coast Guard, a national multi-agency consortium of genome sequencing laboratories, a type of genetically modified organisms ਜਿਹੜੇ कि water bodies ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ pollution ਨੂੰ combat ਕਰਨਗੇ। D statement, indigenous technology which will be used in launching GSLV rockets. Go on. B. Okay, Kamalpreet and Nitish have given us the answer. B, it is a national multi-agency consortium for genome sequencing laboratories. Any more answers? Sonika, B. Okay, B is the correct answer. Lock कर दिया जाए। To expand the whole genome sequencing ਜਿਹੜੀ कोरोना वायरस ਨੂੰ देखने विच लगी जाएगी, राइट, टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी दैट वायरस विच एड ऑन किमें हो रहा है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, इट इज मल्टी एजेंसी कंसोर्टियम फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरीज। ओके, डोंट वरी, डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट दिस टाइम तो कॉन्फिडेंस लूज ना करो। समझो कि ये वो क्लास है जी थोड़े बहुत करंट अफेयर्स छुट गए वो कवर कर रहे हैं, दैट्स इट। डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, आई फैमिलिया was seen in news recently, which statement describes it correctly? Nomenclature procedure which is followed by WHO ਜਦੋਂ COVID-19 वायरस ਨੂੰ नेम कर रहे सी। B statement, an app developed by CDAC for the movement of elderlies living alone. C statement, global database to identify missing persons through family DNA developed by Interpol. D statement, a software developed by Food and Agriculture Organization ताकि evolved traits ਨੂੰ change traits ਨੂੰ study ਕੀਤਾ ਜਾ सके। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ statements ही पढ़िया होंगियां। एल्डरलीज वास्ते भी एक ऐप जिहड़ा है लॉन्च किया गया सीगा। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। व्हाट्स द आंसर? ओके ज्योति, you will get Sunday marathon. You are asking about Sunday marathon.
दिस संडे, if I'm not wrong, तो ये आप पूछ रहे हो है ना? What's the answer? It is a global database to identify the missing persons through family DNA developed by Interpol. A lot of you have given the correct answers. Good. Yes. Sunday marathon वाला link description में नहीं मिलेगा. You can go find it in the playlist. ठीक है? Channel की playlist में आपको मिल जाएगा. Description में नहीं है. Okay? whereby direct identification किसी person ਦੀ possible नहीं है, तो DNA ਦੇ ਨਾਲ this portal, this app will help in identification of the people. Moving on to the next question. Consider the following pairs of species and their protection status. ये दिया है species, ये देता है another protection status. Saltwater crocodile critically endangered, olive ridley vulnerable, then Pilgamy hog endangered. Which is the following is correctly matched? 1, 1 and 2, 2 and 3 and 3 only. Now ये ऐसा question है, एक सारी species आपा कितने कितने cover की थी हैं. I am damn sure I can tell you the day कि किस दिन आपा किस class में वाली species केड़े current affairs which cover की थी हैं. Which one of the following is correctly matched? Okay, 2 and 3 correct, 1 and 2 correct. Any more answers? 1 and 2. Salt water is vulnerable. Any more answers? एक मुंगेर स्पीशी कराई सी ਤੁਹਾਨੂੰ crocodile ਦੀ ਉਸ स्पीशी लास्ट टू लास्ट वीकली करंट अफेयर ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ IUCN ਸਟੇਟਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ. 2 and 3 yes. Answer to this question is 2 and 3. This is the least concern. ठीक है. आई थिंक ये ਉਹ क्वेश्चंस ने ਜਿਹੜੇ बहुत क्लोज कट ऑफ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਐ ਐਂਡ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 2-3 क्वेश्चंस करके कवर नहीं होया. ये ਉਹ क्वेश्चंस ने which make difference. ठीक है. दिस इज द लीस्ट कंसर्न एंड बाकियां ਦਾ IUCN स्टेटस याद कर लियो. ओके ओके. एक क्वेश्चन नितिश, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द टेस्ट सीरीज ऑफ नायब तहसीलदार. हूँ तो बहुत नॉमिनल अमाउंट के डिस्काउंट पे है. LP निकिता कोड लगाओ 10% डिस्काउंट. इट इज बीइंग गिवन एट 500 ओनली. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकरी फॉर सी टर्टल्स जिथे मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स होंदी है, केड़ी प्लेस है वो? एनी आंसर्स? मास हैचिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स वास्ते बड़ी फेमस जगह है, प्रोटेक्टेड एरिया भी इन्हों डिक्लेयर कर दिता गया है. एनी आंसर्स? गहिर माथा. यस, गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू SCO ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट? इन्हों एस्टैब्लिश किया गया सी इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर टू मेंटेन पीस इन द रीजन. Out of the 8 members, 5 Central Asian countries ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦੇ members है. Both India and Pakistan members बने सी same year which 2017 which, and none of the above. तुसी दसनी है correct statement. Go on. Any answers? Yes, Jatin, I will be taking classes in Punjab core batch. Correct. B statement. Okay. 5 Central Asian countries which Turkmenistan भी आंदी है, which is not the part of Turkmenistan is the one country which is not the part of this SCO organization. Other than that, बाकी सारी Central Asian countries जड़ियाँ हैं 4 बाकी they come in this SCO. ठीक है. आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे लागू तो एक लेक्चर भी किया है, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया तो जाके देख लियो. इट इज अ शॉर्ट लेक्चर. मूविंग ऑन. दीज बिकेम मेंबर इन 2017. इजी क्वेश्चन ही बहुत. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज रिलीज्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड देन वी हैव इज नन ऑफ द अबव. Yes, they joined in same summit at Astana summit. Good, very nice. Go on. Any answers? Global Peace Index 2021 important भी है,
It is released by whom? Which organization? C, D, Institute for Economic and Peace ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ इंडेक्स ਨੂੰ रिलीज करता है. आंसर है none of the above. Institute for Economic Development and Peace. It is topped by Iceland. ओके चलिए अगले क्वेश्चन थे. यस, it marks ranks countries on the basis of safety, security, ongoing conflicts, etc. चलो next question. The term Bharitolosus tapini recently seen in news is related to early human species, geographical period in the history of subcontinent, Indian subcontinent, reptile दी species है या फिर it is a rock painting in Indonesia, Paleocene era दी. Tajikistan, it is a member. Turkmenistan is not the member. Okay, it is okay, very nice. It lived approximately 240 million years ago. It is a reptile species. ठीक है, moving on. Next question. Which one of the following statement given is the most appropriate regarding leaf coalition? First statement A देती है. It is a initiative of the least developed and island countries ਜਿਹੜੇ कि global warming area which aims to arrest the global warming and reduce sea level rise. B statement public private partnership है ਜਿਹੜੀ कि mobilize करेगी finance for the protection of tropical forest. United Nation led initiative ਜਿਹੜਾ कि least developed countries ਵਿੱਚ afforestation ਨੂੰ promote करेगा. Initiative of Libya, Egypt, Algeria, France ताकि pollution ਨੂੰ prevent ਕੀਤਾ ਜਾਏ Mediterranean Sea ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay, A is correct, B is correct. Geet says PPP the according to B is the correct answer. B is the correct answer. Okay, any more answers? B. Okay, it is initiative of countries like Norway, USA, UK, right? A countries की करेंगे public private partnership develop करेंगे whereby tropical forests ਨੂੰ protect ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ finances ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ companies like Amazon etc ਵੀ involved ਨੇ. ठीक है, बस इतना को याद रखिए. लीफ कोएलिशन is related, it is a public private partnership model. Okay, yes, moving on to the next question. Which of the following is correct about Pradhan Mantri Awas Yojana? Government scheme the question. Economically weaker section and low income groups are the only beneficiaries. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ beneficiaries सिर्फ दो ने. Second statement, it is a centrally sponsored scheme except for the component of credit linked subsidy which will be implemented as central sector scheme. Options 1, 2, both, and then we have is neither. Go on. Pradhan Mantri Awas Yojana, Ministry of Housing and Urban Affairs the initiative है. It aims to provide housing for all by which year? केड़ा साल जड़ा है डेडलाइन रखा गया है फॉर हाउसिंग फॉर ऑल अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना. वन स्टेटमेंट देखो जी ओनली वाली स्टेटमेंट है ना आप हमेशा शक की निगाह नाल देखा करो. ऑलवेज 99.9% या तो कंप्लीटली स्टेटमेंट करेक्ट होगी या फिर इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, elderly people, low income people, low income group वो सारे involved है, सारे beneficiaries है. and housing for all is by 2024. correct. yes, 60-40 B. northern it is 90-10. yes, answer is B only is correct statement. ठीक है, चलिए moving on. I am happy to see the response. Next, recently a negative import list policy was in news.
Which of the following statement is correct? It contains a list of items that have been banned to import from China. A list comprises environmentally harmful items ਜਿਹੜੇ कि negative impact create करनगे India ਦੇ BOP ਤੇ. C statement, it is a list of items that armed forces ने केवल domestic producers तो procure करना है. And D we have is none of the above. Go on. Negative import list policy. Important question है. C by Defense Ministry. Kamalpreet Singh, Gagandeep, Baldish. Okay. Army, Navy, Air Force दी जड़ी जिन्नी भी needs है वो सारियां पूरियां कीतियां जाणगियां with the help of all the items जड़ी कि domestically manufacture कीतियां जाणगियां. Okay. ताकि डोमेस्टिक स्टडी मैन्युफैक्चरिंग जी है डिफेंस के सैक्टर में आप इनक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. H5N1 मोस्ट कॉमन वायरस कॉजिंग बर्ड फ्लू और एवियन फ्लू. ये केवल बर्ड्स तक रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि एवियन फ्लू केवल बर्ड्स तक ही कम्युनिकेबल है. ऑल नोन सब टाइटल्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए कैन इन्फेक्ट बर्ड्स. ऑप्शंस 1, 2, both and then we have is neither. Yes, India to be emerging defense manufacturing hub. So many things in defense have been announced to be manufactured locally, right? So what's the answer? B. Okay. Second statement is wrong. There are instances जिथे avian flu spread होया है to the people as well. ठीक है. A नहीं आंदा. Okay. Subtypes of influenza A virus. For example, H1N1 ਜਿਹੜੇ है right now ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ऐसा incidence नहीं देखने ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ कि वो birds ਦੇ ਵਿੱਚ spread ਹੋਇਆ है. H1N1 ਇਹ recently news ਵਿੱਚ देखा गया ਸੀ. Again China ਵਿੱਚ instances है that H1N1 virus ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ evidences है कि ये humans ਵਿੱਚ transmit ਹੋਏ है. Animal bird transmission ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ example नहीं है. And this spreads to correct ਜਿਵੇਂ ਕਿ Geet has given the answer, it spreads to animals as well and humans as well. ठीक है. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ H3N2 ਵੀ ਹੈ I think. ਉਹਦਾ ਵੀ evidence ਸੀਗਾ that it has been found right now till in humans only. Okay. चलिए next question. Which of the following correctly describes fit for 55 plan or agenda? ਜਿਹੜੇ regularly session लगा रहे ने उन्होंने ਇਹਦਾ आंसर पता होएगा because we have done this in class earlier. China target to enhance the demographic dividend by 55% at the end of the decade. India the target 55% seropositivity in the population against COVID-19. Third statement, WHO the plan है to reduce the incidence of communicable diseases till the age of 55. D statement, greenhouse gas emission ਨੂੰ 55% low करना by 2030 by European Union. Yes, mocks ਦੇ ਵਿੱਚ questions भी included है. ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਦੀ answer की भी ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है after you attempt the test. Complete explanation ਦੇ ਨਾਲ. ठीक है. So further assistance ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ LP Nikita is the code. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ this is the code on all the courses across our website for Punjab core batch as well. ठीक है. What's the answer? D. Okay. Yes. Answer to this question is D. Greenhouse emissions ਨੂੰ reduce ਕਰਨਾ by 55% by 2030. By European Union, it's 27 members, right? By as compared to 1990 levels. Okay, most welcome. Next question. UNESCO's historic urban landscape project recently launched किया गया है 2 cities in India, which we have done this in weekly class. Tanjore, Mahabalipuram, Udaipur, Bikaner, Gwalior, Orkha, and then we have is Mathura, Agra. Easy question. Yes, India to be carbon neutral by 2070. ते sustainable land restore करना 26 million hectare दा उदी deadline की है. Easy question ना. It is C. Gwalior. Next, faster scheme.
रिसेंटली न्यूज विच देखी गई है, इट इज launched by Ministry of Road Transport and Highway, Niti Aayog, Ministry of Railway, and then we have a Supreme Court of India. Faster. Okay, D, it is by Supreme Court. Very nice. The speed of the answer. Good. जिन्हें भी प्रिजन्स है उन्होंने डीकंजेस्ट कर दिता जाएगा फास्टर स्कीम के अंदर। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ट्रायल्स है, ट्रायल्स ਨਾਲ रिलेटेड पेपर्स है, ਉਹਦੀ बहुत फास्ट स्क्रूटनी ਜਿਹੜੀ है ਕੀਤੀ ਜਾएगी। फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फुल फॉर्म। वेरी नाइस, गगनदीप गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन? United Nation, UNESCO, then we have is United Nation Children's Fund, then we have is the Educational Internation, and then we have is World Bank, should be Internation. Faster, and yes, Geet has also given the answer, great. Any answers? Global Education Coalition is launched by which of the following organizations? UNESCO. Okay, correct answer to this question is A, UNESCO, ताकि tough times ਦੇ ਵਿੱਚ education should not stop, and with the online mode of education, protection can be provided for the personal information, privacy, security. Okay, चलिए next question पे चलते हैं। In a first of its kind, which of the following bovine animals of Himalayan has recently been insured by National Insurance Company for securing their livelihood? Himalayan goat, Bakarwal sheep, Himalayan yak, Himachali pahadi cow. National Insurance Company to insure the livestock, right? कि जिन्हें भी डिजीजेस होंगे इस डिजीज वो डिजीजेस दे अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर जड़ा है प्रोवाइड किया जाएगा इस स्पीशी नू। ठीक है, इट इज सी, याक, शीप। इट इज ओके, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, हिमालयन याक। वी हैव डन दिस इन वीकली क्लास एज वेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इशूड Pragyata guidelines by Union Government is related to guidelines for planning and implementation of digital education, guidelines to impart self-defense training for working women, set of provisions that is to be followed by setting up a committee ਜਿਹੜੀ कि elderly जो इकल्ले रह रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ, D, statement provision for rehabilitation and care of children orphaned due to COVID-19 pandemic. Any answers? A or B भी है, you mean guidelines for planning and implementation of digital education. Okay, 3 answers for A, 4. Any more answers? Okay, answer to this question is A, guidelines for planning and implementation of digital education, Pragyata guidelines. Okay, another important question, अगर तुहानू दीक्षा आ जाए, दीक्षा पोर्टल एंड एक होर पोर्टल है स्वयं प्रभा, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ एजुकेशन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है। ठीक है, इसी इनिशिएटिव के अंदर प्रज्ञाता गाइडलाइंस के अंडर ही 2 होर कैटेगरीज है, दीक्षा एंड स्वयं प्रभा लॉन्च की गई हैं। ये सारी भी ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के नाल रिलेटेड है। ठीक है, आई होप ये नाम तुहानू याद रहेंगे बिकॉज इदा के टर्म्स एग्जाम में पूछे जाने बहुत चांसेस रहते हैं। कोई पोर्टल लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट, मेन्स प्रिंसिपल रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस? एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन एंड अरिथमेटिक food supply growth, longitudinal and latitudinal expense of country and development, behavior of people due to prolonged lockdown, de-statement replacement of torture and coercive interrogation.
मेन्स प्रिंसिपल जिहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा साडा जुडिशरी सिस्टम है दैट शुड वर्क एफिशिएंटली एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स किसी तो सच निकलवाने वास्ते यूज ना किए जान, ठीक है। एंड आप लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करिए। आंसर इज रिप्लेसमेंट ऑफ टॉर्चर एंड कोहर्सिव इंटीग्रेशन विद लॉफुल सिस्टम्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन or maybe second last. It was launched by NASA with coalition of with coalition from European Space Agency. Large telescope in space, only telescope designed to be serviced in space by the astronauts. किस टेलीस्कोप की गल हो रही है? जेम्स वेब, केपलर, हबल, जाइंट मेटावेयर, रेडियो एंड टेलीस्कोप। अमनदीप, एक और क्वेश्चन बचा है। मोस्ट वेलकम। इट इज डोंट आंसर जेम्स। जेम्स क्यों आंसर कर रहे हो? जेम्स न्यूज विच सीगा तां करके क्वेश्चन आया है। जेम्स वाज मेड इन 1990। एक कर दो इनू सर्कल। इट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाउ कैन यू आंसर जेम्स? जेम्स वाले ओहो बहुत माड़ी हुई। इदा ही पेपर विच ओहो करोगे जे स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल नहीं पढ़ोगे। इट इज सी हबल। जेम्स वेब टेलीस्कोप न्यूज़ विच आया है तां हबल दे उत्ते क्वेश्चन तुहानूं आया है, ठीक है। जेम्स इज गोइंग टू रिप्लेस हबल। ये गए 2 करोड़। चलो, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द टर्म हरित धारा recently seen in news in affairs of collaboration among Ganga's river states to maintain ecological flow of Ganga river, anti-methanogen feed supplement. Then we have is green wall extending parallel to Aravalli mountains, and then we have is none of the above. 90 तो दिखा ही नहीं। जहां पे जेम्स वेब दिख गया, हमने जेम्स वेब पढ़ा है, हम तो जेम्स वेब टिक करके आएंगे। हमें नहीं मतलब हबल हुबल से, है ना। इट इज बी ए। एनी मोर आंसर्स? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। मीथेन गैस रिलीज की जाती है एटमोसफेयर विच इज कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जिहड़ी है एंटी मिथेनोइक कैपेसिटी रखती है। दिस इज अ पिल, आप इनू पिल कह सकते हैं, विच इज गोइंग टू जो आप इनू इंजैक्ट करांगे एनिमल्स के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर, तो ये जिहड़ा है एटलीस्ट 17 to 20% मिथेन एमिशन हो रहा है लाइफ स्टॉक के कारण, उन्होंने रिड्यूस करेगा, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ पिल और अ फीड सप्लीमेंट, फीड दे विच मिक्स करके दिता जाएगा। यस, कट मिथेन बाय 17 to 29 और उस नाल सानू मतलब नहीं है। That's all for the day. I hope, of course, we always bring up the challenging questions since exam around the corner है, ता एक level up तक जाना ही पड़ेगा। Difficult questions देके घबराना जाया करो, and this is the time तुसी अपना confidence lose करना afford नहीं कर सकते। Do not lose the confidence। पूरी तैयारी नाल exam में जाओ, पूरा पढ़िया है, चंगी तरह पढ़िया है। इदां दे question तुसी अपनी information विच add on समझो कि last days विच साडा कुछ ना कुछ add on हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। यू आर वेल प्रिपेयर्ड, सारा साल तैयारी की है, मोर देन अ ईयर में भी, ठीक है। हाँ जी, यूपीएससी भी आ गया है, इसलिए हम करेंगे 12 बजे इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स। अपनी हरियाणा पीएससी के लिए वो क्लास भी आप अटेंड कर सकते हैं अभी अराउंड 12 बजे इन सम टाइम। हैव अ ब्रेक एंड आई विल सी यू इन द सेशन। कीप स्टडिंग, स्टे कॉन्फिडेंट and keep attending the session. See you.